students, welcome to all of you on this channel. Our today's topic of discussion is concept of entropy from thermodynamics second. So in last lecture we did the Carnot cycle and its efficiency. So for any reversible Carnot cycle which operates between T2 and T1 temperature, and the formula for their efficiency is this: Q2 minus Q1 upon Q2 is equal to T2 minus T1 upon T2, where Q2 is a heat absorbed isothermally at a temperature T2 and Q1 is heat lost isothermally and reversibly at temperature T1. So after simplification, it becomes equal to Q2 upon Q2 is equal to 1 minus Q1 upon Q2 is equal to 1 minus T1 upon T2. So conclusion is Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2, or after writing in this form, Q1 upon T1 is equal to Q2 upon T2. So conclusion is this: Q upon T is equal to constant. So from this expression we conclude that heat absorbed or lost isothermally and reversibly divided by the absolute temperature at which heat is absorbed or lost is a constant quantity for a particular system. It means Q upon T is equal to constant. Q is the heat exchange between system and surrounding, or we can say that either heat is absorbed at higher temperature or either heat is lost at a lower temperature, but the condition is that system should be isothermally and reversibly conditions. So from this equation, if we are going to use the sign conventions, means Q2 is the heat absorbed, and for heat absorbed we use plus sign. So plus Q2 is a heat absorbed at temperature T2, and heat lost के लिए sign convention की use कितना सी अपा minus. So minus Q1 is heat lost at temperature T1. So इस equation दे विच equation first दे विच अपा की कितना consider कितना sign convention. So Q2 upon T2 is equal to minus Q1 upon T1. So ये जरा right hand side वाला minus का sign है, left hand side पे आके की हो जाएगा plus. Sorry. So इधर conclusion ये है कि दोनों heats ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ add ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ summation ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Summation ਹੁੰਦਾ sum of quantities. So conclusion is that कि जो simple Q है ਉਹਦੀ value कदे भी 0 ਦੇ equal नहीं ਹੁੰਦੀ, because Q is not a state function. It means Q cyclic cannot be equal to 0 because Q की ਹੁੰਦਾ path function, but Q upon T ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ summation ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is always equal to 0. Next is how we prove that entropy is a state function. For this we consider any reversible cycle ABA. Consider this cycle which I draw by this black marker. Here on y-axis pressure and on x-axis volume. So this complete cycle is consist of small number of Carnot cycle. These horizontal line represent isothermal process and this vertical line represents adiabatic process. So by making each Carnot cycle extremely small and from made up of large number of cycles, a jada continuous cycle है जड़ा बन रहा. So thus this reversible cycle can be considered that it is made up of infinite number of Carnot cycles. So ये जड़े Carnot cycle ने आपस में cancel out हो जाएंगे, फिर जड़ा zigzag जड़ा path है सिर्फ वही obtain होगा. So for Carnot cycle we did this, that summation of Q upon temperature is equal to 0, and for infinite change, for infinite number of Carnot cycles, here del Q upon T is equal to 0.
And now we are considering this cyclic process. It means we start from initial state A, goes to B, and again from B to A. So this complete summation, it is made up of two processes. First is going from A to B, suppose it is path first, and second is going from B to A, that is path second. So from A to B, del Q upon T plus from B to A, del Q upon T is equal to 0. It means this whole quantity is equal to 0. So from here A to B there is जिन्ना जड़ा summation है Q upon heat दा वो equal होगा B तो A जान वास्ते आगे की हो जाएगा minus the sign है. So it means Q upon T from going from A to B is equal to minus of Q upon T in going from B to A. So conclusion of this is that this quantity Q upon T is a state function. जिवें कि तुसी इथों देख लो कि ये जड़ा Q upon T है ਇਹਦੀ वैल्यू चाहे आप A तो B जाइए चाहे आप B तो A जाइए दोनों के लिए की आ रही है इक्वल आ रही है. सो ये जड़ी क्वांटिटी है ये स्टेट फंक्शन है. इट मींस ਇਹਦੀ वैल्यू सिर्फ डिपेंड करूगी इनिशियल स्टेट A एंड फाइनल स्टेट B. It does not depend upon the path of the system. So this quantity is known as entropy of the system. So entropy is a Q upon T, and this entropy, this state function is called the entropy of a system. Entropy is always represented by capital S, and as we are doing this entropy from Carnot cycle, and Carnot cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ reversible heat ਲੈਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ. So entropy is Q reversible upon T. Means entropy ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ Q reversible upon T ਹੁੰਦੀ ਆ, because ਆਪਾਂ Carnot cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ heat ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ reversible ਲੈਣੇ ਆ. Next ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ entropy ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ extensive property, and extensive property ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ define ਕਰਦੇ ਆ delta S ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ. So delta S is equal to SB minus SA. SB हैगी है entropy at state B and SA है entropy at state A. So this is the all about this entropy system. So what is the definition of entropy? From equation first we say that entropy change may be defined as quantity of heat absorbed isothermally or reversibly divided by absolute temperature at which heat is absorbed. So this entropy is a state function. It means change in its value depends only upon initial and final state. It is independent of the path of a system, and due to Carnot cycle we consider here Q reversible. So for small change in entropy we represent ds. ds is equal to Q reversible upon T. This is only if we are considering the small change in entropy. And next, units of entropy. So from the formula of entropy we calculate the units of entropy. Units of entropy. As we know, entropy is equal to Q reversible upon T. So entropy is extensive property. So here always delta S, change in entropy. So entropy is expressed in the units heat in joule and temperature in Kelvin. So one units are joule per Kelvin. And also we represent heat in units of calorie and temperature in Kelvin, and other units are calorie per degree per Kelvin. And we know that entropy is a extensive property. So better होएगा अगर आपां इहदी जड़ियां amount of substance ਨੂੰ consider करिए, because entropy की हुंदी है extensive property है. So usually इन्हों ਆਪਾਂ represent करते हैं for 1 mole of substance. So अगर आप entropy दिया exact units देखने हों तो होंगे calorie per Kelvin per mole. Similarly joule
per Kelvin per mole. Why it is so? Because entropy is extensive property, so we defined the amount of substance. We consider for 1 mole of a substance entropy the units होंगे calorie per degree per mole and also joule per Kelvin per mole. Next is entropy change in a reversible process and entropy change in irreversible process. So initially we are considering the case where reversible process. So ਆਪਾਂ suppose करना एक process ਜਿਹੜਾ completely work कर रहा है reversible condition ਤੇ. अगर एक complete process हैगा जिस ਦੇ ਵਿੱਚ reversible conditions follow ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ system ਹੈ ਉਹ heat absorb ਕਰ ਰਿਹਾ reversibly ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀਟ ਲॉस ਕਰੂਗਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹੀਟ ਲॉस ਕਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀਟ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਹੀਟ ਲॉस ਇਧਰ ਹੀਟ ਗੇਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਐਂਟਰੋਪੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ Q reversible upon T if Q reversible is heat absorbed by the system reversibly and entropy change of the surrounding will be इत्थे minus the sign आऊगा because in this case heat is lost by the surrounding and it is also reversibly. So here also Q reversible, here also Q reversible, and the total entropy change for the combined process means for the combined system and surrounding it will be entropy change for a system plus entropy change of a surrounding is equal to put these value from these equation. After putting these values Q reversible upon T, here also Q reversible upon T minus sign, so total entropy change in case of reversible process is always equal to 0. So from here we also conclude that in any reversible process the net entropy change for the combined system and the surrounding is equal to 0. It means there is no net change in entropy. It means delta S is equal to 0. There is no net change in entropy in case of reversible process. Next, entropy change in irreversible process. So firstly अगर कोई प्रोसेस हो रहा अगर वो प्रोसेस किया इरिवर्सिबल प्रोसेस उस दे विच बहुत सारे जिहड़े पार्ट्स ने सो उन्हां दे विचों अगर एक सिंगल पार्ट भी इरिवर्सिबल हो जांदा बाकी सारे पार्ट की हुण रिवर्सिबल सो कहने दा मतलब की है इफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल द प्रोसेस एज अ होल बिकम्स इरिवर्सिबल सपोज इस दे विच आपां की करना जिहड़ी सराउंडिंग हैगी आ उसने टोटल हीट जिहड़ी लॉस कीती ओ हैगी आ Q इरिवर्सिबल सराउंडिंग ने हीट लॉस की Q रिवर्सिबल हुण जिहड़ा सिस्टम है वो हीट अब्जॉर्ब तो करूगा बट ये जरूरी नहीं हैगा भी वो पूरी दी पूरी हीट ही अब्जॉर्ब कर ले मींस वो Q इरिवर्सिबल नहीं अब्जॉर्ब करूगा सिस्टम हमेशा हीट अब्जॉर्ब करूगा रिवर्सिबली बिकॉज जो आपां एंट्रोपी दी डेफिनेशन कीती सी उत्थे भी आपां Q रिवर्सिबल अपॉन T कीता सी इस करके सिस्टम दी एंट्रोपी हमेशा Q रिवर्सिबल अपॉन T होगी सराउंडिंग दी एंट्रोपी हमेशा Q इरिवर्सिबल अपॉन T होगी बिकॉज डेफिनेशन दे विच ही आंदा एंट्रोपी हमेशा सिस्टम दे लिए डिफाइन कीती जांदी है तो वो Q रिवर्सिबल हो सॉरी बट जो सराउंडिंग हुंदा सराउंडिंग दे विच की हुंदा सराउंडिंग एक बहुत लार्ज सिस्टम हुंदा सराउंडिंग दे विच बहुत सारे फैक्टर्स आ जांदे ने सो ओदे विच किते ना किते वो आइडियल प्रोसेस नहीं रहना सो इट मींस अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्लूड करना तो उस दे विच हमेशा सराउंडिंग दे विच ही Q इरिवर्सिबल होगी बिकॉज सराउंडिंग एक लार्ज जिहड़ा फैक्टर हुंदा सो इस करके अगर आप सपोज कर रहे हैं सपोज हीट लॉस हो रही है Q इरिवर्सिबल बाय द सराउंडिंग एंड एक ही होगी इनफाइनाइटली स्लोली हो रही है ते आइसोथर्मली हो रही है टेंपरेचर T ते तो एंट्रोपी चेंज होगी सराउंडिंग दे लिए A वाली वैल्यू एंड एंट्रोपी चेंज सिस्टम दे लिए होगी Q रिवर्सिबल अपॉन T. Now the total entropy change for the combined system and surrounding will be Q reversible upon T minus Q irreversible upon T. ध्यान देने वाली गल है इत्थे दोनों रिवर्सिबल सी तो 0 आ गया सी बट इत्थे एक इरिवर्सिबल है हीट इत्थे एक रिवर्सिबल है सो इस करके इत्थे ओवरऑल आंसर 0 नहीं आऊगा
we all know that the work done is always maximum in case of reversible process. It means work reversible is always greater than work irreversible. And according to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W, and for work of expansion minus W. So ਹੁਣ रिवर्सिबल प्रोसेस ਦੇ ਲਈ A ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ ਡੈਲਟਾ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ, irreversible ਦੇ ਲਈ A ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? This is equal because delta U is a state function. delta U ਦੀ ਵੈਲਿਊ, delta U ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ already, delta U ਹੈਗਾ ਇੱਕ state function. It means ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪਾਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪਾਥ ਹੋਵੇ, ਡੈਲਟਾ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? Q ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ Q ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? 4। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? 5। 6 minus 1, 6 minus 5 1, 5 minus 4 1। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? Q reversible the value is always greater than Q irreversible, and put this value into this equation first. After putting this value, Q reversible upon T minus Q reversible upon T minus Q irreversible upon T, it is always greater than 0. So the conclusion is that for any irreversible process, the entropy change for the combined system and surrounding is always greater than 0. It means an irreversible process always occur by net increase of entropy. Now इथों एक की है important conclusion निकलूगा, spontaneous process ਦੇ ਲਈ entropy criteria ਹੁੰਦਾ। means entropy ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ process ਹੈ ਉਹ spontaneous ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? all spontaneous processes are thermodynamically irreversible. For example, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ falling of water from hill, heat flows from high body to low body, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? irreversible, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So and we said that for irreversible process, the total change in entropy is always greater than 0. So ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ definition ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, all spontaneous processes occurs by a net increase of entropy, because all spontaneous processes are thermodynamic irreversible. So ये भी एक second law of thermodynamic की definition है। So conclusion of both these processes is entropy change of a system and surrounding is always greater than or equal to 0, and this equal to sign represents for reversible process and the sign greater than is for irreversible process. So it means किया ये बहुत important conclusion है कि entropy change जड़ा हैगा ओह दसदा, spontaneity criteria भी दसदा कि केड़े प्रोसेस दे स्पॉन्टेनियस है, केड़े प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। सो जिन्ना प्रोसेसेस दे विच डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होगी, वो प्रोसेसेस की होंगे? स्पॉन्टेनियस इन नेचर होंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स।